Dear students and learners, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. In the previous video, we learned up to the fourth use of article the. And here we are going to start with the fifth use of article the. Nouns like school, college, church, court, hospital, etc. take no article if they are used for their primary purposes. यदि इन nouns का हम बोलचाल में या राइटिंग के दौरान यदि इनका उपयोग करते हैं इनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए, मूल उद्देश्य के लिए, तो वी वोंट यूज आर्टिकल द बिफोर दैट. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल हम पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल इलाज करवाने या इलाज करने के लिए जाएगा, डॉक्टर है तो, चर्च या मंदिर पूजा करने के लिए जाएगा या पुजारी कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए जाएगा, कोर्ट वकील है पैरवी करने जाएगा, जज है तो कोई हियरिंग करने जाएगा. So these are the primary purposes of these nouns. तो मुख्य उद्देश्य के लिए, प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वी वोंट यूज आर्टिकल द. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूं, मतलब इफ आई एम ए स्टूडेंट आई गो टू स्कूल टू लर्न. इन केस इफ आई एम ए टीचर मीन्स मैं पढ़ाने जाता हूं, आई गो टू स्कूल. तो आई गो टू स्कूल मीन्स मुख्य उद्देश्य के लिए, प्राइमरी पर्पस के लिए मैं स्कूल जा रहा हूं. बट इफ आई से आई गो थ्रू द स्कूल, मतलब यहां मैं प्राइमरी पर्पस के लिए स्कूल नहीं जाता. हो सकता है मैं आचार्य महोदय से अपने बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी कोई समस्या को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं या किसी अन्य उद्देश्य को लेकर के स्कूल जा रहा हूं. तो इन दैट कंडीशन आई विल से आई गो टू स्कूल for the primary purpose, I go to the school for different purpose. In the same way, we can take one more example I have not mentioned here. He was going to hospital. वह अस्पताल जा रहा था. He might be a patient. वो कोई रोगी हो सकता है जो इलाज करवाने के लिए जा रहा था, या he might be a doctor. वो कोई डॉक्टर रहा होगा जो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था. बट यदि हम कहते हैं कि अ पर्सन वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो ना तो वो इलाज करने जा रहा था ना ही इलाज करवाने के लिए जा रहा था. ही माइट बी गोइंग टू दैट प्लेस फॉर अ डिफरेंट पर्पस. I have taken one more example here. The hospital is at the next crossing. See here, I am using article the before hospital. So here I am using hospital just as a building or place. एक बिल्डिंग मान रहा हूं मैं इसको, प्लेस मान रहा हूं, या उसके प्राइमरी उद्देश्य से मेरा कोई लेना देना. I have nothing to do with the primary purpose of this hospital. Therefore I am saying the hospital is at the next crossing. अस्पताल एक बिल्डिंग है जो अगले क्रॉसिंग पर है. तो ये बात आपकी समझ आ गई. प्राइमरी पर्पस के लिए है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं है तो वी यूज एनी आर्टिकल लाइक द. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक. नेवर एवर थिंक आई गो टू स्कूल इज राइट एंड आई गो टू द स्कूल इज रॉन्ग. बोथ आर राइट बट दे गिव डिफरेंट सेंस. लेट अस कम टू द सिक्स्थ यूज. वेरी नाइस. फ्रॉम द स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू and from the competitive examination point of view. When two proper nouns are compared for a common property,
The is used before second noun. I mean to say second proper noun. You can mention here second proper noun. See here, sentence number 1. Kalidas is the Shakespeare of India. We are making a comparison between two great literary figures, Kalidas and Shakespeare. These are two proper nouns. इन दो प्रॉपर नाउन्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है उनकी लिटरेरी अचीवमेंट, साहित्यिक उपलब्धियों को आधार मानकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं. Therefore, we'll use article the before the second proper noun. What Kalidas is for India, Shakespeare is for the European countries. In the same way, Dr. Kalam is a great scientist of India. We call him the missile man, who was also the president of Indian Republic. And Newton, he too is a great scientist who belongs to UK, I think. तो इन दो महान वैज्ञानिकों के बीच में हम उनकी साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर जो एज पर द रूल विल पुट आर्टिकल द बिफोर द सेकेंड प्रॉपर नाउन. प्लीज नेवर यूज आर्टिकल द बिफोर द फर्स्ट प्रॉपर नाउन. वेयर विल you use article the before the second proper noun. I think the point is quite clear. You can take example from your own surroundings. In case you are studying in a school and you see one student is a very nice singer, so you can make comparison of his singing quality with that of any great singer like Sonu Nigam, or so you can say you are the Sonu Nigam of this school. In case you have a very nice cricket player in your cricket team and you see the image of Sachin Tendulkar in him, so you may say, oh my dear, you are the Sachin Tendulkar of our cricket team. In this way, we can make use of such sentences in our spoken English also. वैसे तो आर्टिकल द के बहुत सारे उपयोग हैं जिनको एक सीमित समय में कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इवन देन हम सारे बच्चे कुचे को 7th कैटेगरी में रख दे रहे हैं. We can use article the before the names of mountain ranges, group of islands or islets, rivers, oceans or seas, famous books or religious books, unique things, musical instruments, superlative degrees, newspapers, ordinal adjectives, so on and so forth. First 2-3 things need explanation. Mountain ranges. We use article the before the names of mountain ranges, not before any particular mountain. We say the Himalayas. The Himalayas. See here, I'm not using the Himalaya. The Himalayas. A should be there. So Himalaya is not any one mountain. The Himalayas, in fact, is a range of mountains, or we can call it mountain ranges. Similarly, the Alps. We never ever say the Alps. We never say Alps without S. We say the Alps, which is in European countries. It is one of the largest or biggest mountain ranges. Similarly, in Indian context, the Aravallis, plural form, mountain ranges. Without S, the will not come here. The Aravallis, S has to be there because we use before the mountain ranges, plural form mein hoga. The Vindhyas, the Satpuras, like that. The Western Ghats. One more
very important thing, before the name of any group of islands or islets. Keep in mind, S is not pronounced here. It remains silent. Don't say island, Iceland. It is island, and this too is islet. So we say the Andaman and Nicobar Islands. Whenever we use the Andaman and Nicobar Islands as plural form. So we say the Andaman and Nicobar Islands. It has to be islands, group of islands. Andaman and Nicobar is not any particular island. It is nearly 572 islands. It is a group of 572 islands. Therefore, we are using article the before it, which is in the Bay of Bengal. You may see the map of India. In the same way, we say the Lakshadweeps, the Lakshadweep, Lakshadweep Islands. Here too we are saying islands, F, plural form. Lakshadweep is not only one island, it is a group of islands. It has nearly 37 islands, I think. And rest of the things are not so difficult. We can easily understand. We use the before the name of any river like the Ganga, the Yamuna. Oceans, for oceans we can take the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Mediterranean Sea, the Red Sea and all that. Famous book, the Bible, the Guru Granth Sahib, the Lajja, the Insider, you can take many more examples of the same sort. Unique things, अद्वितीय जो दुनिया में अपने प्रकार की एक है, the sun, the moon. We can take some examples of the famous buildings like the Taj Mahal, the Qutub Minar, and like that. We all keep in mind, you have to use article the before the name of any musical instrument, like the guitar, the veena, the tabla, the violin, and all that. I know how to play the guitar. The has to be there. We always use the article the before any superlative degree. He is the best player in my team. And, you are the most handsome boy of our group, like that. And we always use the before the name of any newspaper. You may have seen the Hindu, the Navbharat Times, the Hitvar, the Chronicle, etc. तो ये मैंने जितना संभव हो सका आर्टिकल द पर चर्चा किया. इसके बाद भी आपको यदि कोई ऐसी कोई if you have any doubt, you can put your problem and I will try my best to give you full satisfaction. And in the next video, we'll continue with any other important determiner. Thanks for watching my video.